students, welcome to my YouTube channel Study with Sonal, and here you know that I'm here to teach you all the maths of class 12th, and we were doing the chapter number 3 matrices. Those who are new to my channel, so for you I have already uploaded my previous lectures on my channel, so you can take help, and if you have any query you can ask by commenting. Okay, so we have done the inverse of a matrix concept, and now we will do some more questions on that. We have already done some questions. So here the question number 5th we have. Okay, so 2174 we have to find the inverse of the matrix. So what we are doing here, I have written it already. The matrix by row transformation, A is equal to IA हम लिखते हैं. A is the matrix, I is the identity matrix, 1001 and A is the matrix. Now, what we have to do, we just have to change this matrix into the identity matrix. कैसे करते हैं हम लोग? I want 1 here. What we can do, I want some big number here. So we can interchange the rows even. So I am doing that. अगर मुझे rows interchange करना है तो there is a symbol of that. वो क्या रहता है ना, देखते हैं. It is R1 interchanges to R2. तो 7 4 ऊपर आ गया, 2 1 नीचे, and here also 0 1 interchanges. कुछ और नहीं है, बस इतना ही है. ओके, R1 इंटू R2 चेंज कर दिया. देन आई वॉन्ट 1 हेयर. 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 1 आए, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ. अगर 2 3 6 होता है, तो आई एम डूइंग दैट. R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. 7 माइनस, इमेजिन 7 माइनस 2 इंटू 3 कितना, 7 माइनस 6 विच इज़ 1. सो मुझे ये क्या चाहिए, मेरी R1 चाहिए. सो आई एम डूइंग दैट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6. देन सेम विद दिस, 4 माइनस 3 इंटू 1, सॉरी here 7 minus 6 which is 1. 4 minus 3 into 1 1, then 2 1, and here R1 कितना आ जाएगा, 0 minus 3 into R2 कितना आ जाएगा, minus 3. 1 minus 3 into 0 1 only, and R2 remains as it is. अच्छा, जिसमें चेंज नहीं करते हैं हम लोग वो सेम रहता है, उसको पहले ही लिख देना चाहिए वैसे तो. Now here I have 1, I want 0 here, 1 0 0 1. So what I can do, R2 में से 2 times R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा, करेक्ट. सो आई एम राइटिंग हियर R1 एज इट इज़, एंड हियर ऑल्सो R1 एज इट इज़ लिख देते हैं. R2 में 2 times this, तो 2 minus 2 0. 1 minus 2 into minus 1, so this will give you minus 1. And here again 1 minus 2 into minus 3 कितना हो जाएगा, 7, राइट. 1 minus 2 into 1, 0 minus 2 into 1, minus 2, A, correct. So 1 0, I want what here, 1, right. So can I multiply R2 को मैं चेंज कर सकती हूँ into minus R2. Yes, I can do that. So R1 as it is, R2 में 0, and here it will be 1, and here R1 as it is, R2 में minus 7, and here it is 2. करेक्ट, ये हम कर सकते हैं. Now what we have to do, just see 1 0 0 1. Oh, in the last lecture I have told you the pattern also. We can revise that pattern. रो में क्या पैटर्न रहता है, we will go like this. This is the fixed pattern. हमें एक फिक्स कर लेना चाहिए so that हमें हर बारी पता हो हमें किस फ्लो में जाना है. बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस करना वैसे. तो R1 को चेंज कर लिया मैंने, R1 माइनस R2. क्यों ऐसे किया, बिकॉज पहले तो R2 को एज इट इज़ लिखते थे, यहाँ पे भी R2 को एज इट इज़ लिखते थे, देन लाइक दिस. अभी R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, करेक्ट. नाउ हियर minus 3 माइनस ऑफ minus 7 विच इज़ plus 7 कितना आ जाएगा, 4. 1 minus 2, this will give you minus 1. And here we have done, हमें ये identity matrix बनाना होता था. With the pattern of this we have made this. Okay, so what is the A inverse now? This is going to be inverse. जो I के
बाद हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो हियर वी हैव द आंसर. So here we have the answer, correct? Okay. Now let's do the next question. Next question is what? Sixth question. 2513. See, अभी 2 by 2 मैट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट वी कैन गो फॉर 3 by 3 वेरी इजीली. बहुत ईजी हो जाता है 2 by 2 में कमांड आ जाए तो. ठीक है, ओके. सो नाउ let's do the sixth question. I'm writing it here. You can see 2513. ओके. अभी मुझसे पहले आप सोचना एंड करना. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर बट ट्राई टू डू इट विद मी. ओके, क्योंकि अभी वो लेवल आ चुका है हमारा. बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू आई ए. आई एम राइटिंग हेयर 2513. आई इज वॉट 1001 ए. So what I want here 1. Can I interchange the rows? Yes, we can do that. बहुत ईजी हो जाएगा. R1 R2 को interchange कर दिया. 1325 and here it is 01. Here also I am interchanging the rows. Now this is it. ये करना था, कर दिया. Now I want 0 here. What we can do? R2 को change करते हैं. R2 minus 2 times R1 है ना. R1 as it is. Here also R1 as it is. R2 minus 2 times of R1. तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? 2 minus 2 into 1 कितना आ जाएगा? 0. 5 minus 3 into 2. 5 minus 6 which is minus 1. And here is same. 1 minus 2 into 0. 1. 0 minus 2 into 1. Minus 2. ठीक है. So here we have done 1 0 0. यहाँ पे क्या आना चाहिए? Sorry, 1 0 1 0. Right? सेम पैटर्न रो ट्रांसफॉर्मेशन का ये होता है ना. तो अभी मुझे क्या करना है? यहाँ 1 चाहिए. तो व्हाट आई एम डूइंग, R2 को चेंज कर रही हूँ माइनस R2 में. ईजी हो जाता है. R1 एज इट इज़ है. यहाँ पे भी R1 एज इट इज़ है. सी, जिसमें चेंज नहीं है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. वहाँ पे भी हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, राइट. सो हियर 0 एज इट इज़. -1 + 1 1. -1 2. Here we have changed the signs, right? 1 0 and यहाँ क्या चाहिए? 1, correct. So this is the last number I have to change. I want it to be 0. So what I will do? R1 minus 3 times of R2. correct. ठीक है, ये मैं कर देती हूँ. क्या करना है मुझे? R1 को चेंज किया. R1 minus 3 times of R2. So पहले देख लेते हैं क्या था. You can pause the video. पहले मैं ये चीज़ लिख रही हूँ which is not going to change. अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या था रफ में. 1 3 0 1, correct. -1 2. This is the previous step I am writing so that we don't get confused here. So I have 3 here. 1 minus 3 into 0. This will give you 1 only. 3 minus 3, 0. And here 0 minus 3 into -1 कितना आ जाएगा? 3. 1 minus 3 into 2. -6. 1 minus 6 is what? -5. So yes, we have done. Hardly in 2-3 minutes you can do, and after practice you can do it in 1 minute, I guess. Depends on practice only. Maths is all about practice. This is I. This is what A inverse we have. So A inverse is 3 minus 1 minus 1 2. Yes, this is your answer. Now let's do the questions with column transformation. By column transformation I'm doing here. Okay. Next question. Question number 7. I have 3 1 5 2. So by column transformation I'm doing here. तो column transformation में हमको क्या करना होता है ना? A is equal to AI. I can write that. This time you have to shift I पीछे, ठीक है. So write it here.
and same way say we will go. Okay. But the main important thing is that वहाँ पे pattern ऐसे चला था like this, but in row transformation the pattern goes like this. See, okay. So here I want 1 first of all. So can I change the columns? Yes, I can do that. Columns interchange करते हैं C1 C2. So 1 2 3 5. And here also A as it is 0 1 1 0. ठीक है, right. Okay, let's do the next. हमें ऐसे ही जाना है. इसको मुझे कितना चाहिए? 0 1 0 0 1. Correct. So I want 0 here. What I will do? C2 को change किया. C2 minus 3 times of C1. So here the C1 is as it is. Here also the column 1 is as it is. Column 2 में change लाना है. 3 minus 3 times 0. 5 minus 3 into 2. 5 minus 6 minus 1. And here 1 minus 3 into anything. 1. 0 minus 3 into 1. Minus 3. Correct. So I have done 1 0. I want 1 here. So what I will do, I will multiply C2 column 2 by minus 1. So C2 को change किया minus C2 में. Okay. So in the next step, I'm doing it. Column 1 as it is रखा. Column 2 में change ले आए. Column 1 as it is रखा. Column 2 में change ले आए. So I've changed many numbers here. क्या क्या मैंने change कर लिया? 1 0 1. I want 0 here. So what I will do the next step? C1 को change कर देंगे. C1 minus 2 times C2. उसको 2 से multiply करके. So C1 C2 पहले as it is रख देते हैं. C1 में change लाते हैं. 1 minus 2 into 0 1. 2 minus 2 0. And here it is 0 minus 2 into minus 1 2. 1 minus 3 into 2. 1 minus 6, which is minus 5. So here we have the answer. Correct. This is your A inverse. 2 minus 1 minus 5 3. Easy. So ये था column transformation. We can do one more question on column transformation. Alright. So आप लोगों का practice हो जाएगा. Question number 8 here I have. So A is equal to 4 5 3 4. A is equal to AI first of all. A is what? 4 5 3 4. AI 1 0 0 1. What I want 1 here, right? ऐसे ही चलना है हमको कॉलम में, राइट? तो मुझे यहाँ 1 चाहिए. What can I do? What can I do? What can I do? Can I make minus 1? तो कर देते हैं ना. C1 को चेंज कर देती हूँ. C1 minus C2. लेट्स सी क्या होता है. C2 तो as it is है. पहले लिख लेते हैं. C2 as it is है तो 1 सॉरी C2 as it is है. C1 नहीं था. ठीक है. Now C1 minus C2, this will be minus 1. 3 minus 4 minus 1. Yes. 1 minus 0, 1 only. 0 minus 1 minus 1. So here I have minus 1, which I want to be 1. So I will do C1 को मैं change कर रही हूँ into minus C1. ठीक है. C1 को change किया into minus C1. Now what will I do? क्या करना चाहिए मुझे? 1 0. I want 0 here. So 5 times multiply करके यहाँ 0 बना देते हैं. Easy. ठीक है, कर देते. तो C2 को change किया. C2 minus 5 times C1. Okay, I'm turning the page. Before going to the next step, I'm writing the step again here. 1 1 5 4 A minus 1 0 1 1. ठीक है.
क्या था स्टेप, अगेन आई एम राइटिंग, C2 को चेंज किया, C2 माइनस 5 टाइम्स C1, ठीक है, तो C1 एज इट इज़ है, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 इंटू 1, दिस विल गिव यू -1, ये एज इट इज़, C1 एज इट इज़, C2 इज़ व्हाट, 0 माइनस 5 इंटू -1 कितना आ जाएगा 5, एंड 1 इंटू -5 विच इज़ -4, करेक्ट, 1 0 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, सो C2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -C2 से, हमें आ जाएगा C1 एज इट इज़ 0 1, C1 एज इट इज़, एंड C2 को चेंज किया -5, चेंज कर दिया 4, करेक्ट. Now what we can do, what we can do 1 0 0 1 0 1 0, I want 0 here, so क्या करना चाहिए हमको, यहाँ 0 लाना है, तो आई शुड डू C1 को चेंज कर देते हैं, C1 माइनस C2 एज इट इज़, 1 माइनस 0 1 0, एंड हियर ये सेम है, C2 सेम रहेगा, एंड मेरा C1 कितना आ जाएगा, -1 एंड माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4, 1 माइनस 4 इट इज़ -3, सो आंसर कितना हो जाता है मेरा, A inverse is what, 4 minus 5, let me check, 1 minus 4 minus 3 minus 1 plus 5, correct, so -3 4, this is your A inverse. I hope आप लोगों को ये भी clear होगा. So we have done many questions on this, ठीक है, so I am giving you अभी question number 9 homework, और आपको ये करना है by column transformation, ठीक है, and one more homework to you, question number 10 homework by row transformation. These two questions are homework and you can do this, and please comment me, please ask, because subscription is free. If you like my channel, subscribe, share and do comments and share it with your friends, because सबका ट्यूशन नहीं होता है, I know. मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, जब ट्यूशन नहीं होता था, देयर वाज नो सपोर्ट, सो दैट इज़ वाई आई एम हियर, सो दैट कोई ऐसी कंडीशन से ना गुजरे, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.